very suggestive of its culture. Bha literally means light, and Rat jism, uski sadhana mein jo nimagn hai. So the country is absorbed in the reflecting on the various modes of knowledge. So it's called a Gyan Sanskriti or Gyan Kendrit Sanskriti, knowledge-centered civilization. You see, so far Sanskrit is concerned, the name itself became popular around 5th century to refer to a particular language. Before that, we have used vast literature in this language. But naming a language is a different thing, always. So most of our terminology of thought, vocabulary of thought, come from Sanskrit. You know, either in Tatsam or Tadbhav form, they are taken from Sanskrit, mostly. And Sanskrit has no particular locale, as we have with many of the languages in India. Language involves a geographical space, a particular region, but this is not the case with Sanskrit, because Sanskrit has been a pan-Indian language. So scholars of Kashmir come from all the regions, in different times, from different places. And from Adi Shankar to Abhinav Gupta. Adi Shankar was from Kerala, Kalari. And then Abhinav Gupta is in Srinagar. And you see this whole mapping, linguistic mapping. And one of the disciples of Abhinav Gupta, a great poetician, aesthetician, philosopher, grammarian, musician and mystic of 10th, 11th century. One of his disciples come from Tamil Nadu. His name is Madhuraj Yogi. At the age of 74, he moves from Tamil Nadu, reaches Srinagar, studied under him, under Abhinav Gupta, and at the age of 78, Madhuraj Yogi goes back to Tamil Nadu along with the texts and all such things. So such has been the integrity and interstate communication. Again, you have Hemchandracharya in Gujarat, Patan. And from Gujarat, you see in Bengal, where you have Chaitanya Mahaprabhu. So all these are coming and contributing in Sanskrit and contributing in a way to Indian culture. There is a continuity of Sanskrit texts and thinkers, right from the Rigved and Agmas and Guru Granth Sahib and the Tamil texts everywhere. Many of these texts were translated or adapted in the regional languages to teach philosophy, poetics, and so terminology is same. There is no difference in terminology. Whether we are studying Bangla poetics, poetics in Bangla or in any other language, it's the same. So there are 14 knowledge disciplines, 4 Vedas, 6 Vedangas, 4 Shastras like Puran, Anvikshiki, Mimamsa, Smriti, like this. So it goes on. Most important thing is that Sanskrit texts, and particularly epics, Ramayana and Mahabharata, they created a kind of what we call Brihattar India, Greater India. So this is an epic culture which transcended the boundary of India and got disseminated in Southeast Asian countries and everywhere. So this is what I wanted to say, and there are so many things since time is there. So I think I should stop here. Namaskar. Thank you very much. Thank you, sir. Now can I request Professor Om Prakash Singh to speak on Hindi. हमारे कुलगुरु प्रोफेसर शांति सिंह पंडित जी, नाना मोहन साहब, एजुकेशन सेक्रेटरी आसाम, सचिव साहित्य अकादमी
डायरेक्टर साहब, डीन साहब, मित्रों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में अपनी भाषा की क्या भूमिका रही है। मैं हिंदी के माध्यम से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दो तीन चीजें मैं पहले क्लियर कर दूं कि भारत में भाषा की विकास परंपरा रही है और उस विकास परंपरा में भारतीय भाषाओं ने अलग अलग लिपि भले ग्रहण कर ली, लेकिन शब्दों का और कहने का या उसमें जो कुछ कहा गया उसका रूप लगभग समान है। हमारी भारतीय भाषाएं संस्कृत से प्रेरणा लेती है अधिकांश, और खास तौर से हिंदी तो पाली, संस्कृत से होते हुए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, इन तमाम रूपों से गुजरते हुए हिंदी में आई और हिंदी का एक जो रूप बना वह लगभग 12वीं शताब्दी से बनने लगा था। और 12वीं शताब्दी या उसके बाद जो कुछ लिखा गया या जो हिंदी क्षेत्र की संस्कृति बनी, वह केवल हिंदी क्षेत्र से ही नहीं निर्मित हुई थी, बल्कि तमाम जगहों से, अनेक क्षेत्रों से उसने आधार ग्रहण किया था। हमारी संस्कृति क्या है, किस रूप में हम अपनी संस्कृति को देखें? संस्कृत का दायरा बहुत बड़ा है। कुछ जगहों पर जाकर के हम अपने खान पान, रहन सहन, पोशाक तक ही संस्कृति को केंद्रित कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। संस्कृति केवल वहीं तक सीमित नहीं है। संस्कृति का संबंध हमारे आचार विचार और कार्य करने की पद्धति से भी है, तरीके से भी है। हम कैसे कार्य करते हैं, किस रूप में करते हैं। मैंने पहले जो एक बात आप लोगों के सामने रखी कि हम संस्कृत से आधार ग्रहण करते हैं, और एक रूप में और रखना चाहूंगा कि जैसे अभी आपने मैडम जिक्र किया तोलकपियम पर बात करते हुए उस समय भी मैंने विस्तार से यह बात रखी थी कि पाणिनि के व्याकरण या तोलकपियम में केवल व्याकरण नहीं है, व्याकरण के साथ साथ जीवन में हमें क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरह से करना है, हमारे कितने संस्कार होंगे, हमें किस रूप में रहना है, हमें इन तमाम चीजों के बारे में बात वहां मिलती है। और उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि साउथ और नॉर्थ का यह जुड़ाव, सांस्कृतिक जुड़ाव आज का नहीं, पुराना है। दूसरी चीज, जब हम संस्कृति पर बात करें और ये देखें कि जिस भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है वह किसी क्षेत्र विशेष से नहीं। हिंदी में तो सबसे ज्यादा प्रचलित भक्ति काल रहा, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भक्ति काल रहा, और भक्ति काल के जितने आचार्य हुए या भक्ति के जो प्रवर्तक हुए, जो फैलाने वाले हुए, वह दक्षिण से चलकर उत्तर तक आए थे। अभी शंकराचार्य का जिक्र हुआ, आदि शंकराचार्य का। मैं एक और नाम लेना चाहूंगा कि रामानंद के बारे में तो कहा ही जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। अगर यहां रामानंद ना आए होते तो शायद कबीर न होते, तुलसी न होते, या होते तो भारतीय संस्कृति के जितने बड़े पर्सपेक्टिव को वे लोग उठाते हैं उतना बड़ा पर्सपेक्टिव न उठता है।
अनेक जगहों से लेकर के चैतन्य महाप्रभु की बात आई, बंगाल से, आसाम से, उड़ीसा से, सारे जगहों से आप देखें जो भक्ति मूवमेंट है, और भक्ति मूवमेंट जिस कल्चर का निर्माण करता है वह अलग अलग जगहों से उठा हुआ मूवमेंट भले हो, लेकिन एक समन्वित कल्चर का निर्माण करता है। दूसरी तरफ हमारी राष्ट्रीय संस्कृति है, हम पूरे देश को जोड़ करके देखना चाहते हैं, और पूरे देश को जोड़कर देखने के क्रम में उसी तरह के साहित्य का, उसी तरह के आचार विचार का, उसी तरह के रहन सहन का, उसी तरह की भाषा और बोली का व्यवहार हुआ है। इस चीज को हम हिंदी में जो इस समय लिखा जा रहा है, या जो इस समय के कुछ पहले लिखा गया, जिस समय हम संघर्ष में थे उस समय कुछ लिखा गया, इशारा मेरा भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरफ है। और यह मैं याद दिला दूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो उत्तरार्ध है, मतलब उनके जीवन का जहां अंत होता है, उसके कुछ पहले ही भारतीयार पैदा होते हैं। और जिस नेशनल इंटीग्रेशन की बात और जिस कंबाइंड कल्चर की बात चल चुकी थी एक बड़े क्षेत्र में, उस बात को भारतीयार भी लेकर आते हैं, सुब्रमण्य भारती भी लेकर आते हैं। मित्रों, हमें यहाँ कहने में गुरेज नहीं होगा कि भारत अनेक भाषाओं का देश है, लेकिन जब ये भाषाएं आपस में लेन देन नहीं करती, तब तक कोई बड़ा राइटर नहीं पैदा करती, तब तक कोई बड़ा चिंतक नहीं पैदा करती। हिंदी के राइटर जब दूसरी भारतीय भाषाओं में छपते हैं, पढ़े जाते हैं, हमारे रहन सहन के बारे में लोग जानते हैं, तभी वह रचनाकार बड़ा होता है। इसी तरह से दक्षिण के, पूरब के और जगहों के ऐसे भी लेखक हैं कि जो अपनी भाषाओं में उतना नहीं पढ़े गए हैं, जो दूसरी भाषाओं में पढ़े गए हैं जितना। इसके लिए मैं अनुवाद और अनुवाद कर्मियों को धन्यवाद दूंगा कि अनुवाद भी एक ऐसा माध्यम है जो एक जगह की संस्कृति को दूसरी जगह पहुंचाता है। अनुवाद केवल भाषाओं में शब्दों को जड़ देना नहीं है, हर भाषा की अपनी एक कल्चर है, और उस कल्चर को हम कैसे इंटीग्रेट कर लेंगे, यह अनुवाद का काम है। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मैथिली शरणगुप्त एक बड़े रचनाकार हुए, भारत भारती उन्होंने लिखा, और भारत भारती में एक सवाल उठाया कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गया। मित्रों, इसको चाहे जैसे कहा जाए, लेकिन इस सवाल के माध्यम से अपने बुनियाद की, अपने जड़ों की तलाश करना है। और जब भी हम अपने जड़ों की तलाश करेंगे तो हमें ये लगेगा कि हम बिल्कुल एकीकृत रूप में है। पूरा भारत भाषाओं के उच्चारण भेद में भले हो, लेकिन अपने कर्तव्य बोध में, जो उसका सामाजिक कर्तव्य है, जो उसका दायित्व है, एक साथ रहते हुए हम जो कुछ करते हैं वह एक मिला जुला रूप है। और उस मिला जुला रूप को आप हिंदी के माध्यम से या हिंदी साहित्य के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं, पड़ताल कर सकते हैं उसकी। धन्यवाद मित्रों। Thank you, sir. Now may I request Professor Udainath Sahu to speak on Odia. For that, I also request kindly brief your speech. Respected Honorable Vice Chancellor, Professor Tiruchirapalli, Dr. Nanda, Dr. K. Srinivas Raoji, Secretary Government of Assam, Professor Dept Das, Professor Madhav Rashid, Professor Omprakash Singh, all the esteemed court speakers of this session and faculty friends and students. समस्तन को नमस्कार कमा. My language is Odia. So Odisha was granted the status of a separate province
in 1936, April 1st, as a first provincial linguistic basis during the British rule. It is stated in the Mahabharata in Sanskrit that their three sons, Anga, Banga, Kalinga, were born by Saint Devgatama and Queen Sudeshma. Odisha was called Udra, Assam was called Raja, and Bengal was called Gaura. Odisha is the modern name of the ancient Kalinga Empire, various known as Udra, Utkal, Kangoda, Kalinga, Dosal, and Kangoda in different periods of the history. So the first reference to the language is found in Bharat Mun's Natyasastra, 4th century BC. He refers to Udra Vibhasa, that is language spoken in the Udra Desha, a part of the Kalinga. It is also proved that Oriya is one of the most ancient languages of India. It has been influenced by both Sanskrit and Prakrit. It is also proved that Oriya is one of the most ancient languages of India. It has been influenced Sanskrit and Prakrit. Still, Oriya is the 6th Indian language and first Indo-Aryan language to be designated history, not having borrowed extensively from the other languages. India has a large number of religions, philosophical and folk traditions. It is multilingual, multi-ethnic and multi-religious. Indian culture is an odd mixture of Aryan and Dravidian culture. So Odisha culture, that is the land of Jagannath culture. Our culture, language and literature, that is mostly based on Jagannath culture during the ancient and medieval literature. Jagannath is a wooden deity, so he is the Dakshina Kali for the Shaktas, Bhairava for the Saivatis, Maha Ganpati for the Ganapatyas, and at the same is the Surya Narayan for the Sadas. So Jagannath, Balabhadra and Subhadra are symbolically represented as right faith, right knowledge and right action for the Jainism, as Buddha, Dharma and Sangam for Buddhism. Jagannath is the Lord of universe. Jagannath is called Sabarnarayan, that is the combination of Arja and Anarja and Nilamata, Sattva Dharma Samanaya. This is the concept clearly in Jagannath culture. So, a major turning point in the world history placed around 261 BC when the modern Emperor Ashok invaded Kalinga, famously that is called Kalinga War. The soil of the Kalinga, that is Odisha, transferred from Nindashoka to Dharmashoka, who in turn was responsible for the spread of Buddhism in South East Asia as far as China and Japan. In the Kalinga edict expressed its concern for the welfare of the whole world, that all men are my children, that is reflected in the 14th major rock edicts of Ashok near to Bhubaneswar at Audi. This is the contribution of Oriya language, literature and culture to Indian culture. The Buddhist tradition were written between the 7th and 12th century AD. They were written in the Proto-Oriya, Bengali and Assamese language when the languages were being separated. The language is the closest to Oriya. Many of their links are contemporary colloquial Oriya and do not need translation. A number of Siddhacharya who wrote the verses of Charjapada were from Odisha. Out of 84, there are 36 from Odisha. In ancient Oriya literature during the pre-Sarva period, Sisuveda, Gorakhnath Samhita holds an important place. The texts are the remarkable text of Natha Dharma and Saiva community. Shaladas, 15th century, is the first poet who compared the Mahabharata and Vichitra Ramayana, Chandipura in the Oriya is the great poet of the soil. The Mahabharata of Shaladas is the largest epic in Asia. Its most significant claim to distinction is that no other modern Indian language
has a Mahabharata produced so early by a single author in Indian languages. An interesting pattern emerged from here. No other regional Mahabharata is as powerful as that of composed by Saradas from the point of tales and characters. So Gadapadma, that is not found in Sanskrit, but found in Assamese Mahabharata, written by Ramu Saraswati, and in Bengali Mahabharata, written by Kasiram Das. So that is the peculiarity. The Vichitra Ramayana, written by Siddheshwar Das, which means Saradas, a Sudra poet of 15th century, is a Ramayana with a difference. Unlike Valmiki's Ramayana, which is the mean for the sophisticated literary, it has all the qualifications to be called as folk Ramayana that caters to the psychological and emotional needs of the sub-character. Here, Sita plays the leading role, pushing Rama to the background, who believes in an existence room regretted himself. What is much more important in this text, in the Vichitra Ramayana, is the fact that Vichitra Ramayana is translated into Telugu by 6 eminent poets in 17th century. This is the interesting. Baladanda's Lakshmi Puran is considered the first manifesto of women's liberation of feminism in Indian literature. Jagannath's Bhagavat, who was the most influential work of the period, which had a great influence on Oriya people as a day-to-day philosophical guide. The Bhagavat Tungi is an integral part of the rural community life in Odisha. Assamese poet Shankar Dept wrote the Bhagavat in Assamese and played a key role in establishing the spiritual centers across Assam called Namangara, which is the model of the Oriya Bhagavat Tungi. It is interesting to note that as per the 1900 census, Odisha enjoyed the highest position in literary among all the states of India. That is the census of 1900 report. Bhima Bhoi, the saint poet of the Mahima sect, raised his voice against prevailing social injustice, religious bigotry, and caste discrimination. He raised a powerful voice against inequality among human beings. His immortal words continue to resonate even today. What our president on her address in the parliament said, प्राणीको आदत दुख अप्रमित देखो देखो के बसहु वो जीवन पचे नरके परिथाओ जगत उद्धार हो let my soul be condemned to hell but let the universe be redeemed. This soul-scaring couplet finds a place in the entrance of the Eon building. This is the role of my language in the development of Indian culture. Thank you. Thank you, sir. Now, may I request Professor Vishwanath to speak on Kannada language. Respected Vice Chancellor of JNU, all the dignitaries who are present here, my dear professors and students. Kalabeda, Kolabeda, Usiyan Udelu Beda, Anyarige, Asaya Padabeda, Tanna, Bandisabeda, Idiru, Adielu Beda, Ide Antaranga Shuddhi, Ide Benanga Shuddhi. Kalabeda, don't stolen, don't cheat, don't harass anybody. This is inner meaning. This is outer meaning. This is Kannada language. Kannada language is the overflow of powerful feelings. Kannada language is something divine. Kannada language is art, a culture. Culture means to give, to love each and every one, to cultivate them. Horticulture, agriculture, floriculture, the language itself, a role model of the nation, the role model of the country, a beautiful role model of the every society, every universe. In 12th century, Basavanna, we called Anna Basavanna, was a great reformer, great social thinker. His work for the society. He always saying about good thing to the
people. He says always do good, be good, work hard. Kaya kave kailasa. Work is worship. He started one Anubhava Mantapa. Now Anubhava Mantapa is called Parliament of India. He says I will mention a few beautiful lines before you, madam. What Anubhava Mantapa they have says to the people, before the people, all men are equal. There is no discrimination in between the man and the woman. No man is high or low either by the birth, sex or occupation. Everybody is equal. There is no hierarchy. There is no food. There is no rich. Women has equal rights with man to follow the path of self-evolution. Each one should follow a profession on his own choice. अरे काम कर लीजिए, काम 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 काम, नहीं काम कर, नहीं रोटी, नहीं मकान, नहीं कपड़ा. Everybody should work. Everybody should live with good affection, with good love, with good understanding. This is what our Kannada language, the role model of the development of the Indian country. Thank you.